Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, I also know that you all are brilliant, active, beautiful, brave, obedient, outstanding, perfect, talkative, unique, caring, loving, bright, disciplined, efficient, enthusiastic children. So students, you must have understood that I'm going to continue with adjectives because I've used so many adjectives for you. So as I'm going to continue with Unit 16 adjectives, please take out your English grammar books and turn to page number 61. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 61 as I'll be continuing with Unit 16 adjectives. Now students, in the last video, I explained what are adjectives. Let's revise. Adjectives are describing words and they tell us about the size, shape, color, number, quality, quantity of a noun. So all the describing words which describe a noun are known as adjectives. Students, today I am going to start with exercise 1 given on page 61. That's now give description of your grandfather using adjectives in maximum sentences. Now students, there are certain adjectives given in the word bank. I'm going to read those adjectives and the adjectives are slim, tall, grey hair, friendly, truthful, humble, energetic, sensitive, loving, caring, respectable. Now with the help of these words, we need to write a paragraph on your grandfather. You need to describe your grandfather using some of these adjectives. And here we need to keep in mind that our paragraphs should have maximum adjectives in a sentence. So students, I'm going to start with the paragraph of the first exercise and that is now give description of your grandfather using adjectives in maximum sentences. Fine. Now, yesterday I had explained a paragraph on grandmother. I'll read out that paragraph for you and with the help of that paragraph we'll write a new paragraph on your grandfather. So, hi, I am Manu. I would like to tell you about my granny. Her name is Mrs. Kamini Mishra. She is about 60 years old. She is fat but quite active. She has long curly hair. She cooks tasty food. She likes honest people. She watches funny serials. She reads religious books. Her favorite color is yellow. She tells me interesting anecdotes of my father's childhood. She always gives me right suggestions. She is my close friend. I wish for her long and healthy life. So this was
the paragraph on grandmother. Now, looking at this paragraph, we'll frame a paragraph on your grandfather. Fine. So, my grandfather's name is, I'm putting a dash. Please write the name of your grandfather in this blank. Fine. I've just drawn a blank. You need to mention the name of your grandfather in this blank. है ना? My grandfather's apostrophe S, because you're going to describe your grandfather. So my grandfather's name is dash. Whatever the name is, please write, mention the name of your grandfather over here. Then the next line would be, he is about 70 years old. Fine. You can change the number also. If you know the exact age of your grandfather, you can change the age of your grandfather. Instead of 70, you can write 64, 65, 68, whatever the age may be. So please write the age of your grandfather if you are aware about it. Then, now we need to describe the grandfather. So, he is slim and tall. Now, if your grandfather is not tall, you can change, you can write short. If he's not slim, you can write healthy, fat. So, as per the physique of your grandfather, you can change the adjectives. बेटा अगर आपके grandfather short हैं, fat हैं, healthy हैं, so you can change the adjectives. Fine. But I'm using the adjectives which are given in the word bank. So he is slim and tall. Then he has grey hair. जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके आधे बाल वाइट हो जाते हैं एज के कारण और आधे ब्लैक होते हैं, तो वो ग्रे अपीयर करते हैं. सो ही हैज ग्रे हेयर. फाइन. नाउ द नेचर. He likes, he likes truthful and humble people. Now, grandfather likes ट्रूथफुल. ट्रूथफुल मतलब जो हमेशा सच बोलते हैं. हम्बल, हम्बल मतलब जो लोग बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं होते, जिनको बिल्कुल भी घमंड नहीं होता. तो ग्रैंडफादर लाइक्स हम्बल एंड ट्रूथफुल पीपल. देन he is an energetic and sensitive person. He is an energetic and sensitive person. Grandfather is very energetic. That in spite of being of old age, he has got lot of energy.
एंड सेंसिटिव मतलब वो सबके बारे में सोचते हैं, है ना. सो ही सेंसिटिव स्पेशली टू द नीड्स ऑफ ऑल दी family members and the persons around him. So he is an energetic and sensitive person. Then he is loving and caring. He is loving and caring by nature. उनका जो स्वभाव है very loving and caring. Then the last word is respectable. So he is a respectable person in the society. सोसाइटी में सारे लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं. So fine, this is the paragraph on your grandmother. Again, sorry, grandfather. Again, I'm reading it. Please listen to me carefully. My grandfather's name is blank. In this blank, you will write the name of your grandfather. Fine. सब अपने अपने दादाजी या नाना जी का नाम, ग्रैंडफादर दादाजी भी लिख सकते हैं या नाना जी भी, जिसका नाम आपको आता है. बट प्लीज एंश्योर आप उनके आगे श्री SHRI श्री लगा के आप उनका नाम लिखेंगे. फर्स्ट नेम एंड द सरनेम बोथ, एंड प्लीज एंश्योर दैट द फर्स्ट नेम एंड सरनेम you should start with capital letter. Fine. So my grandfather's name is Shri, and then please mention the first name and the surname of your grandfather. Then he is about 70 years old. You can change the age if you know the correct age of your grandfather. 70 की जगह 60, 65, 75, 80 अगर आपको उनकी करेक्ट एज पता है, so you can always change this. He is about 70 years old. He is slim and tall, है ना. उनकी फिजिक, उनके फिजिकल फीचर्स आपको डिस्क्राइब करने हैं कि वो दिखने में कैसे है. तो he is slim and tall. If your grandfather is not slim, you can change the adjective. You can write fat, healthy. Instead of tall, you can write stout, short, whatever you feel, depending upon the physique of your grandfather. He has grey hair, है ना, grey hair. And किसी के grandfather के अगर hair are white, you can write white. If you want to mention black, you can write black. और किसी के अगर grandfather के सिर पे बाल नहीं है तो वो BALD bald यूज कर सकते हैं. He is bald, है ना. तो डिपेंडिंग आपके ग्रैंडफादर के बाल कैसे हैं. He likes truthful and humble people. Now grandfather, he likes truthful and humble people. He is an energetic and sensitive person. He is loving and caring by nature. He is a respectable person in the society. SOCIETY, society. Again I am reading it. Please listen to me and accordingly do this exercise given on page number 61. My grandfather's name is Shri. Please mention the name along with the surname of your grandfather, and it can be your grandfather or your maternal grandfather, whatever you want to mention. He is about 70 years old. He is slim and tall. He has grey hair. He likes truthful and humble people. He is an energetic and sensitive person. He is loving and caring by nature. He is a respectable person in the society. तो students, ये adjectives if you want to change, आप age change कर सकते हो, आप कलर उनके हेयर का चेंज कर सकते हो, आप उनकी जो फिजिक है उसके लिए जो adjectives यूज किए ये चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज दी adjectives डिपेंडिंग अपॉन कि आपको लगता है कि नहीं मेरे ग्रैंडफादर के लिए इसकी जगह मुझे ये लिखना चाहिए. सो यू कैन ऑलवेज change the adjectives. Now I hope all of you have understood this paragraph. So now
Again I'm reading and then I'll be erasing it. My grandfather's name is Shri. बेटा श्री हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम श्री मिस्टर हम जनरली यूज करते हैं, बट श्री इज एन इंडियन वर्ड विच शोज रिस्पेक्ट, है ना. एंड वी ऑल आर इंडियंस और हमको यहाँ पे श्री लिखना चाहिए सो दैट कि हम अपने जो बड़े हैं उनका हम जो आदर सम्मान करते हैं वो यहाँ पे दिखे, है ना. मिस्टर इज वेरी फॉर्मल वर्ड, है ना. एंड श्री जब हम लगाते हैं तो दैट शोज कि हम जो रिस्पेक्ट वो हम सीनियर लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट है वो हमारी यहाँ से शो होती है. फाइन. सो माय ग्रैंडफादर्स नेम इज श्री. यू प्लीज मेंशन दी नेम एंड दी फर्स्ट नेम and the surname. He is about 70 years old. He is slim and tall. He has grey hair. He likes truthful and humble people. He is an energetic and sensitive person. He is loving and caring by nature. He is a respectable person in the society. Fine. So I hope all of you have written this. So now I'm going to erase this and write the next exercise. Now, our next exercise is, that is exercise 2. Circle the odd one out. Now, we need to circle the odd word out, है ना. There are 5 words given and we need to know the meaning, and on the basis of the meaning, students, we need to circle the odd word out. Fine. अब बेटा ये सारे इनमें जनरली सारे वर्ड्स जो है मैक्सिमम सिनोनिम्स हैं और एक जो है वर्ड एक एकदम डिफरेंट है. सो वो जो डिफरेंट वर्ड है उसको हमें सर्कल करना है. फाइन. और उसके लिए वी नीड टू नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. फाइन. नाउ the first one is happy, then amused, elated, ecstatic, and the last word is depressed. Now, happy, amused, elated, ecstatic and depressed. बेटा इसमें 4 words are synonyms जिनके same meaning है and 1 word is the antonym. एक different word है जो उन 4 words से मैच नहीं करता. सो जो ऑड वन आउट है उसको हमें सर्कल करना है. नाउ ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ हैप्पी, है ना. सबको हैप्पी का मीनिंग पता है. अम्यूज्ड, अम्यूज्ड ऑल्सो मीन्स हैप्पी, खुश होना. हैप्पी का सिनोनिम अम्यूज्ड भी है. सो हैप्पी ऑल ऑफ यू नो बहुत खुश होना. अम्यूज्ड ऑल्सो मीन्स हैप्पी. देन एलिटेड, एलिटेड ऑल्सो मीन्स हैप्पी, खुश, है ना, बहुत खुश, है ना, खुश, excited. Ecstatic also means happy and, है ना. So ये जो 4 words है, happy, खुश, amused, happy का synonym है,
एलिटेड भी हैप्पी का सिनोनिम है, एक्सटैटिक भी हैप्पी का सिनोनिम है. नाउ द फिफ्थ वर्ड इज डिप्रेस्ड. और डिप्रेस्ड होना है ना, एक हैप्पी होना तो आदमी बहुत हैप्पी होता है ना, हैप्पी एंड एनर्जेटिक. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं सारे हैप्पी, एंथुजियाज्म, एनर्जी शो कर रहे हैं. एंड ये जो फिफ्थ वर्ड है डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मीन्स एकदम निराश हो जाना है ना. व्हेन एवरीथिंग मतलब बहुत ज्यादा सैड, यू फील कि ना मतलब बहुत ज्यादा निराश हो जाना है ना. नो एनर्जी, नो एंथुजियाज्म लेफ्ट, दैट इज डिप्रेस्ड. ऑड वन आउट कौन सा हुआ बेटा? डिप्रेस्ड. व्हाई? बिकॉज ये जो फोर वर्ड्स हैं दे मीन हैप्पी, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक है ना, कि जोश, उमंग, खुशी से भरे हुए. हैप्पी, अम्यूज्ड है ना, एलिटेड एंड एक्सटेटिक, ये चारों तो मतलब सेम है. दैट मीन्स कि हैप्पी, खुश, उमंग, जोश से भरे हुए. एंड जो ऑड वन आउट है वो कौन सा वर्ड है? दैट इज डिप्रेस्ड. सो वी विल encircle the word depressed. All of you, please encircle the word depressed. Fine. And for doing this exercise, you need to know the meanings. आपको meanings पता होंगे तभी तो आप odd one out word को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा कौन है. अब आपको हैप्पी तो इट्स अ कॉमन वर्ड, बट अगर आपको अम्यूज्ड, हाँ, एलिटेड, एक्सटैटिक वर्ड अगर आप ऐसे पढ़ोगे, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग है ना, एंड इट इज क्लियरली रिटन इन द एक्सरसाइज दैट यू नीड टू कंसल्ट द डिक्शनरी. फाइन. सो प्लीज राइट द मीनिंग्स ऑन अ रफ नोटबुक सो दैट वंस यू राइट you'll remember कि हाँ ये लिखा था, दिस मीन्स हैप्पी है ना. Amused means happy, elated means happy, and ecstatic means happy. So if you'll write, so you'll remember. So please write the meaning, है ना, कि happy, amused, elated, ecstatic ये synonym है. Synonym किसको बोलते हैं? Words having the same meaning. And इसमें जो odd one out है वो कौन सा है बेटा? Depressed. So depressed means बहुत ही when there is no hope left है ना, बहुत निराश हो जाना. That is depressed. So odd one out is depressed. Then the second one is sad, dejected, anxious, gloomy, depressed. These are the words. The words are sad, dejected, anxious, gloomy, depressed. Now we need to find the odd one out. अब बेटा 4 words हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम है और एक वर्ड डिफरेंट है. सैड तो सबको पता है, उदास होना. डिजेक्टेड मीन्स ऑल्सो सैड, डिजेक्टेड. आई होप यू विल रिमेंबर lesson 3, the inauspicious justice, which you have studied in class 3. In that Emperor Akbar was dejected. You have read this word in class 3. Emperor Akbar dejected tha, है ना, because he tripped and fell in the bathroom. I hope now you have recalled, है ना, you have recalled the lesson. So dejected also means sad. Anxious, anxious means क्यूरियस है ना, व्याकुल होना, किसी को जानने की इच्छा, क्यूरियस होना. एंशियस कभी कभी बहुत जो दूसरों की, कभी आप बहुत चिंता करते हो तो वो भी एंशियस हो जाता है. एंड ग्लूमी मीन्स कि चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि अंधेरा है, यू आर फीलिंग वेरी सैड, तो ग्लूमी ऑल्सो मीन्स सैड. और डिप्रेस तो पता ही है कि सैड है ना. सो 4 वर्ड, सैड, डिजेक्टेड, ग्लूमी एंड डिप्रेस्ड, ये चारों मीन्स वेरी सैड है ना. तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा हुआ? एंशियस, क्योंकि एंशियस एक फीलिंग है ना,
when आप जब वरिड होते हो, then you are anxious, या आप बहुत व्याकुल हो जाते हो, क्यूरियस हो जाते हो, you want to know something, है ना, आपको कुछ जानने की इच्छा होती है, क्यूरियस होते हो, तो उसका मीनिंग भी anxious होता है. So in this, the odd one out is anxious. Fine. So please encircle the word anxious. Done. Now the third one, angry, then delighted, outraged, furious, infuriated. The words are angry, delighted, outraged, furious, infuriated. अब बेटा 4 words का मीनिंग सेम है, 4 words सिनोनिम है और एक वर्ड डिफरेंट है. एंग्री तो सबको पता है, गुस्सा होना, है ना, गुस्से में आग बबूला हो जाना, एंग्री. आउटरेज ऑल्सो मीन्स एंग्री. सॉरी, डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. डिलाइटेड का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी. एंग्री तो सबको पता है, गुस्सा करना, है ना. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. आउटरेज्ड ऑल्सो मीन्स एंग्री. फ्यूरियस ऑल्सो मीन्स एंग्री. फ्यूरियस मतलब गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाना. इन्फ्यूरिएटेड ऑल्सो मीन्स कि एंग्री. सो द ऑड वन आउट, इन सब में जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है? डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, क्योंकि बाकी सारों का मीनिंग तो सेम निकल रहा है, दैट इज एंग्री. ऑड वन आउट कौन सा है बेटा? Delighted. So please encircle the word delighted. Fine. Now the fourth one, kind, considerate, variety, thoughtful, solicitous. Solicitous. Now the words are kind, considerate, variety, thoughtful, solicitous. Kind सबको पता है कि जिसको दूसरों पे दया हो. कंसिडरेट, जो दूसरों के लिए सोचता हो. वैरायटी तो सबको पता है ना, जब बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हो तो उसको हम वैरायटी बोलते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आप घर गए हो, मम्मी ने बहुत सारी खाने की डिशेस बनाई, तो आप बोलेंगे टुडे माय मदर हैज प्रिपेयर्ड अ वेराइटी ऑफ डिशेस, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, उसको वैरायटी बोलते हैं. थॉटफुल होना मतलब दूसरों के लिए सोचना. सॉलिसिशियस होना मीन्स दूसरों के कंफर्ट, हेल्थ, हैप्पीनेस का ख्याल रखना. तो 4 वर्ड्स जिनके सिमिलर मीनिंग है, दे आर काइंड, कंसिडरेट, थॉटफुल एंड सॉलिसिशियस. तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ बेटा? वेराइटी. वेराइटी मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ. कभी कभी आप बोलते हैं ना, आई सॉ अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, है ना, कि आपने अलग अलग टाइप की कोई कुछ भी अलग अलग टाइप की चीजों को हम वेराइटी बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. तो इसमें ऑड वन आउट क्या हुआ? वेराइटी. बाकी सबका तो मीनिंग कि मिलता जुलता है, कि दूसरों का ख्याल रखने वाला, दूसरों के कंफर्ट, हेल्थ, हैप्पीनेस के बारे में सोचने वाले, है ना. Kind, considerate, thoughtful and solicitous, so they have got similar meanings. The odd one out is variety. Now the fifth one, afraid, irritated, scared,
terrified, and frightened. Now, afraid सबको पता है ना? Afraid means डरा, डर जाना. इरिटेटेड तो सबको पता, इरिटेट करना मतलब किसी को परेशान कर देना, इरिटेट कर देना, है ना? स्कैर्ड मीन्स अगेन अफ्रेड, डरा हुआ. टेरिफाइड अगेन मीन्स अफ्रेड. फ्राइटेंड ऑल्सो मीन्स अफ्रेड. सो विच इज द ऑड वन आउट? द ऑड वन आउट इज इरिटेटेड. So afraid, scared, terrified and frightened, they've got similar meanings. The odd one out is irritated. So please encircle irritated. In the first one, the words are happy, amused, elated, ecstatic and depressed. The odd one out is depressed because बाकी चारों का meaning is happy only. In the second one, sad, dejected, anxious, gloomy, depressed. जो चार वर्ड्स हैं ये सब सैड है. एंड ऑड वन आउट इज एंशियस, व्याकुल जिसको बोलते हैं. द थर्ड वन इज एंग्री, डिलाइटेड, आउटरेज, फ्यूरियस, इन्फ्यूरिएटेड. इसमें चार वर्ड्स का मीनिंग एंग्री ही होता है. एंड द ऑड वन आउट इज डिलाइटेड विच मीन्स हैप्पी. फोर्थ में काइंड, कंसिडरेट, वेराइटी, थॉटफुल, सोलिसिशियस. बेटा ये चार हैव गॉट सिमिलर मीनिंग्स. दैट जो दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों का टेक केयर करते हो. द ऑड वन आउट इज वेराइटी. देन द फिफ्थ वन इज अफ्रेड, इरिटेटेड, स्कैर्ड, टेरिफाइड, फ्राइटेंड. फोर वर्ड्स हैव गॉट सिमिलर मीनिंग विच मीन्स अफ्रेड, है ना? सिनोनिम्स हैं, डरना जिसको कहते हैं. एंड द ऑड वन आउट इज इरिटेटेड. सो आई होप स्टूडेंट्स you have encircled the odd one out. So with this we finish today's class. That's all for today, students. Please do revise these exercises and write the meanings of the given words in your rough notebook. Thank you, students. Have a good day ahead.